Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 9.1, right? And in today's session we are going to discuss some basic operation on rational number like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so let's start our today's session. So first basic operation is addition. So addition of rational numbers. So when we have two rational numbers with same denominators, we simply add the numerators keeping the denominator same. For example, if we have two rational numbers like 2 upon 5 plus minus 1 upon 5. See, first is positive rational number and second is negative rational number, but their denominators are same. ओके तो इस केस में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर तो ऐड हो जाते हैं लेकिन डिनोमिनेटर आपका वही रहता है. ओके सो सी 2 प्लस एंड द सेकेंड न्यूमरेटर इज -1 अपॉन this denominator will be same, means 5. Okay, see, you know how to add integers. So first one is positive integer, second one is negative integer, means one of them is negative, so always we do subtraction. So 2 minus 1 is 1 and the sign goes with greater number, that is 2 here, that is positive. So in answer also the positive sign. Okay, and the denominator is 5. So the answer of this addition is 1 upon 5. One more example we take here. Suppose if we have minus 11 upon 3 plus minus 2 upon 3. Here both the rational numbers are negative rational numbers and we are adding them, but their denominators are same. Okay, so same as we used to do in fractions. If the denominators are same, we just add the numerator part keeping denominator same. So same we have to apply here. So we will add here only the numerator. So first numerator is 11 plus and the second numerator is -2 upon denominator will be the same 3. See, both the numerators are negative. Okay, both the integers, these integers are negative. So when we add two negative integer, we always do addition. So 11 plus 2 is 13 and the sign goes with greater number, that is 11, and before 11 is negative sign. So in answer also there will be negative sign and the denominator is 3. So the answer is -13 upon 3. So this is how we add two rational numbers with same denominator. We just add only the numerator keeping denominator same. Okay, what happens when we have two rational numbers with different denominators? So as we do in case of fraction with different denominators, first we take LCM, then we find the equivalent fraction with denominator as LCM, then we add the fraction. Same we have to do here in case of rational number. First we will take out the LCM of the denominators which are different. Okay, then we find the equivalent rational numbers of those rational numbers with denominator as LCM, then we add the numbers. Okay, so let's understand this with the example. Okay, so for example, we have two rational numbers with different denominators. Suppose first one is -1 upon 3 plus second one is 2 upon 5. See here, first one is negative rational number and second rational number is positive, but denominators here are not same, different. Okay, so what we do here, we first take out the LCM of the denominators, means
the LCM of 3 and 5. So LCM of 3, 5 is the product of the numbers itself. So 3 into 5 is 15. Okay. So here LCM will be 3 into 5. Whenever you have given two numbers such that there is no any common factor between them, so the LCM is itself its a product. ओके जब भी आपके दो नंबर ऐसे दिए जाते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही हो जाता है. सो यहाँ पर 3 और 5 के बीच में एक्सेप्ट 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम उसका प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है 15. Okay, now we have to find the equivalent rational number of these two with denominator as 15. Okay, so see, minus 1 upon 3. We have to make this 3 as LCM. LCM is 15. So we can make this 3 by multiplying by 5. 3 5s are 15. Okay, similarly we have to make this 5 as 15. So 2 upon 5 into 3. So minus 5, so minus 1 into 5 is minus 5 and 3 5s are 15 plus 2 3s are 6 and 5 3s are 15. Now these are the rational numbers with same denominator. So in such case just we add the numerator part. So minus 5 plus 6 and denominator will be same 15. Okay, one is negative, another is positive, so there will be subtraction. So 6 minus 5 is 1 and the sign will go with greater number, that is 6 is here, and before 6 positive sign, so the answer will also be positive. So 1 upon 15 will be the answer. 2 upon 10 plus minus 9 upon 5. So first one is positive rational number and second is negative rational number with different denominators 10 and 5. Okay, so first we will take the LCM of 10 and 5. So it will be 5. Okay, so first we will take the LCM of 10 and 5. See, 10 and 5. 2 5s are 10 and 5 will be as it is. Now by 5. 5 1s are 5 and 5 1s are 5. So LCM will be 2 into 5 means 10. Okay, so now we have to make these denominators as LCM 10. So 2 upon 10. 2 upon 10 is already with denominator 10, so no need to change this, plus minus 9 upon 5. Now to this 5 we have to make 10 LCM. So we will multiply here by 2. So 2 upon 10 plus minus 9 into 2 is minus 18 and 5 2s are 10. Now the denominators are same. So we just add the numerator part, 2 plus minus 18 upon 10. Okay. So one is positive, other is negative. One is positive, another is negative. So there will be subtraction. So 18 minus 2 is 16 and the sign will go with greater number, that is 18 here, and before 18 there is negative sign. So in the answer also there will be negative sign upon 10. Okay. Now you can see 16 and 10 are the multiples of 2. So we will divide these two by 2. So minus 16. So 2 8s and 2 5s. So answer will be minus 8 upon 5. So like this we add two rational numbers with different denominators. Now next is subtraction of rational numbers. So while subtracting two rational numbers, we add additive inverse of rational number that is being subtracted to the other rational number. Okay, for example, if we have two rational numbers, suppose 2 upon 11 minus 1 upon 11. Okay, there are two rational number, first one is positive, second one is negative. So here we are doing subtraction.
Okay, so what we do, we add the additive inverse of rational number that is being subtracted from the other rational number. Okay, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका एडिटिव इन्वर्स को दूसरे रैशनल नंबर से ऐड कर देते हैं. ओके, मीन्स ये जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो किस में चेंज हो जा रहा है, एडिशन में. कब, देखिए, फर्स्ट वन यू हैव टू राइट एज इट इज 2/11, देन यू हैव टू पुट एडिशन साइन. नाउ इन सेकेंड रैशनल नंबर व्हाट वी डू, वी टेक इट्स एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -1/11 का एडिटिव इन्वर्स. वैल्यू आपकी सेम ही रहती है, 1/11 ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस. ओके, सो 1/11 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1/11. एडिटिव इन्वर्स आर ऑपोजिट विथ इक्वल वैल्यू. ओके, ऑपोजिट साइन के उतने होंगे, माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, लेकिन वैल्यू ये जो नंबर्स हैं वो सेम ही रहेंगे. ओके, वाई, बिकॉज वी एड -1/11 to 1/11, we get additive identity, that is 0. Okay, so two numbers such that their addition is 0, their addition is additive identity, are called additive inverse of each other. Okay, so -1/11 का additive inverse क्या हो जाएगा, 1/11. इसी तरीके से 1/11 का additive inverse क्या हो जाएगा, -1/11. Because when we add two numbers such that their sum is 0. Likewise, if we take 5/7, so its additive inverse will be -5/7. Okay, why? Because when we add 5/7 to -5/7, we will get additive in identity, that is 0. Okay, so -5/7 is the additive inverse of 5/7. So what we were doing, the first rational number we will write as it is, and we add this rational number to the additive inverse of second rational number that is being subtracted. मतलब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका एडिटिव इन्वर्स को हमें इस रैशनल नंबर से ऐड करना है. ओके, सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1/11 इज 1/11. नाउ यू कैन add these two numbers. So as the denominators are same, so we will write the denominator same, and only we will add the numerator part. So 2 plus 1 means 3/11. Okay, so in case of subtraction, what we do, we add the additive inverse of the rational number that is being subtracted to the other rational number. जो रैशनल नंबर आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका हमें एडिटिव इन्वर्स को हम फर्स्ट रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर आपका 2/11 है और इससे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -1/11. तो इसके एडिटिव इन्वर्स मीन्स -1/11 के एडिटिव इन्वर्स को हम इस रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, -8/5 -2/3. So here we are subtracting two rational numbers. Okay, so we will add here the additive inverse of rational number that is being subtracted from the other rational number. Okay, so -8/5 will be as it is. The first rational number we will write as it is, and we will add the additive inverse of सेकेंड रैशनल नंबर दैट इज़ बीइंग सब्ट्रैक्टेड. जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका हमें एडिटिव इन्वर्स को ऐड करना है दूसरे रैशनल नंबर के साथ. ओके, सो 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2/3. ओके, नाउ दिस सब्ट्रैक्शन इज चेंज्ड इनटू एडिशन एंड वी कैन add the number easily. See, here the denominators are different, so first we will make out the denominators same by taking the LCM. So -8/5, 5 and 3, the LCM of 5 and 3 is 15, so we will make these 5 and 3 as
15. So minus 8 upon 5. So if we multiply this by 3, so we will get denominator 15. Likewise, minus 2 upon 3. If we multiply by 5, so we will get denominator 15. So minus 8 into 3 is minus 24 and 5 3s are 15 plus minus 2 into 5 is minus 10 upon 3 5s are 15. Now the denominators are same, so we can add only the numerator part. So first one is 24 plus minus 10 upon denominator is 15. Okay, since both the integers in numerator part are negative, so we will add here. So 24 plus 10 is 34 and the sign will go with greater number, that is 24. So before 24 is minus sign, so there will be minus sign in answer also. So minus 34 upon 15. This is your final answer. Okay, तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम एडिटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे. जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके एडिटिव इन्वर्स को दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं. ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि फर्स्ट रैशनल नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे. ओके, और सेकंड रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स को आप ऐड करेंगे उससे. सो दिस इज हाउ वी सब्ट्रैक्ट any two rational numbers. So next operation on rational number is multiplication. How do we multiply two rational numbers? What we do here, we multiply numerator to numerator and denominator to denominator. Okay, so the product of two rational number is product of numerators upon product of denominators. Okay, product means multiplication. So product of two rational number is equals to product of numerator upon product of denominator. ओके, क्या करते हैं, अगर दो रैशनल नंबर है उनका आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आंसर में क्या होगा, न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट एंड अपॉन डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, if we have 1 upon 2 multiply by 3 upon 5. First one is positive, second one is negative rational number. So the answer will be product of numerators means 1 into minus 3. न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. सो 2 into 5. So 1 into minus 3 is minus 3 and 2 into 5 is 10. So the answer will be minus 3 upon 10. Okay. So this is very simple operation. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इफ सपोज वी हैव गिवन if we have two rational numbers and we are multiplying them. So what we will do, again numerator to numerator, multiplication of numerator to numerator. So minus 3 into minus 2 upon 9 into 5. So minus 3 into minus 2 is plus 6. Both are negatives. So the multiplication of two negative integer is always a positive integer. So plus 6 upon 9 5s are 45. So the answer will be 6 upon and 45. Okay. So this is how we do multiplication of two rational numbers. Let's move to the next operation, division.
So next operation on real number is division. How do we divide two rational numbers? So to divide one rational number by other rational number, we multiply the reciprocal of rational number with the other rational number. See, for example, if we are dividing 5 by 2 by 3 by 5, both are the rational numbers and we are dividing one rational number by other rational number. So what we multiply the reciprocal of one rational number to the other. Okay, so reciprocal of 3/5, 3/5 का reciprocal क्या होगा? 3/5 में न्यूमिनेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर 5 है, तो इसके रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 5 न्यूमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाता है। जो पहले न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, सो रेसिप्रोकल आर नथिंग बट द टू नंबर्स इफ वी मल्टीप्लाई एंड वी गेट इन आंसर एज 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर हम इन 3/5 को 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मीन्स 1 होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, तो इसीलिए 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। ओके, सो 5/2 इंटू 5/3। ओके, क्या करना है आपको, जिस नंबर को आप तो क्या करना है आपको, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसका आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है दूसरे रैशनल नंबर को। ओके, फर्स्ट वन you will write as it is 5/2 and multiply the reciprocal of this second one. ठीक है, सेकेंड वाले का आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट वन को, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 × 5 is 25 and 2 3 are 6. Okay, let's take one more example. If suppose if we have -5/3 and we are dividing it by -3. Okay, -5/3 divided by -3. तो देखिए यहाँ फर्स्ट आपका क्या है, रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर। सो एवरी इंटीजर वी कैन राइट एज रैशनल नंबर। ओके, सो -5/3 डिवाइड बाई -3/1। क्या किया, -3 को आपने -3/1 रैशनल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं डिवीज़न के केस में कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हमको क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ -3/1 विल बी 1/-3। ओके, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल में आप क्या करते हैं, एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं, मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। सो द रेसिप्रोकल ऑफ -3/1 विल बी 1/-3। ठीक है, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल को हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे रैशनल नंबर से। सो -5/3 इंटू 1/-3। ओके, फर्स्ट रैशनल नंबर को आपको एज इट इज़ रखना है, सेकंड के रेसिप्रोकल से आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए -5 इंटू 1 एंड 3 इंटू -3। So -5 into 1 is -5 and 3 into -3 is -9. Both are negative, so answer will be positive, means 5/9. Okay, so this is how we do division of rational numbers. So that's all about today's session, in which we have discussed basic operations on rational numbers like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss exercise 9.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.